So, welcome to Vedanta IAS Academy. In this video lecture, we are here to discuss the recent test which is of history. The test number is 17th, right? So, it is 17th test number and it is on the subject of history and art and culture. So, now we will start with the discussion of this topic, this particular test paper. Question आपके सामने है and I will be giving you the right answer. और जहाँ पर required है, we will also be discussing the question in detail. Okay. Now, look at the very first question. So, here you have the question. The very first question is with reference to the Chaitya and Vihara. Consider the following statement. Buddhism में चैत्य और विहारा important चीज़ होता है. चैत्य क्या है? Prayer hall. विहारा क्या होता है? Is the residential place of the monks. Okay. So, the पहला statement बोलता है आपको बताना है कि which of the following is the correct statement. ठीक है. The first statement says Chaitya is essentially a place of worship in which the stupa is embedded while Vihara is the residence of monk. चैत्य क्या है? चाहे स्तूप जहाँ पे prayer and the Vihara is the residential place. This is absolutely right. The next statement, the architecture of the early Chaitya used the wooden reeds while which were later replicated in the stone carving as well. मतलब शुरुआत में it was of the wooden, later period में जो स्तूप बनने लगा वो पत्थर का बना. This is absolutely right. आपको पता होगा अशोका से पहले वाला जो फेज है उस समय पर जो भी स्तूप and any other structure is made, all the structures are of wooden, right? Are the wooden structures. So this statement is absolutely right. The third one is both Chaitya and Vihara are found in Ajanta caves while only Vihara are found in Ellora. This is wrong. एलोरा में भी आपको चैत्य और विहारा दोनों मिलता है. तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. हेंस द राइट इज ए 1 and 2. राइट. नाउ द सेकेंड वन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द साउथ इंडिया टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ द्रविड़ा स्टाइल. इसमें लिखा हुआ है तीन चीज. वन इज विमान, द अदर वन इज गोपुरम एंड द थर्ड वन इज शिखर. और किसका एक्सप्लेनेशन राइट है? Viman is the pyramidal structure, pyramid like multi-storied structure located above the गर्भगृह. गर्भगृह के ऊपर जो pyramidal structure होता है, is that गर्भगृह क्या है? जहाँ पर DT को रखते हैं, जहाँ DT placed है, उसके ऊपर जो pyramidal structure है, क्या उसको हम विमान बोलते हैं? The answer is right. This is absolutely right. Then गोपुरम क्या है? It is the entrance gate. Absolutely right. एंड शिखर क्या होता है? तो विमान के ऊपर जो डोम स्ट्रक्चर बना होता है दैट इज कॉल्ड शिखर. एंड हेंस ऑल द थ्री इज राइट. सो द राइट आंसर बिकम्स डी 1, 2 and 3. नाउ मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन. दिस इज रिलेटेड टू एलोरा केव. इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है. फर्स्ट स्टेटमेंट, द केव रिलेटेड to all the three religion, that is Hindu, Buddhist, Hindu and Jain. This is absolutely right. Second, the cave number 16, that is Kailasha temple. This is important. Kailasha temple is has been carved from top to bottom. Yes, this is absolutely right. और एक ही पत्थर से बनाया गया है, that is monolithic पत्थर. Absolutely right. Third one, Rashtrakutas ruler have made a significant contribution to the architecture of the Ellora. Absolutely right. Then fourth, the caves are arranged entirely on the steep slope of Sahyadri in only a semi-circular form. No, this is wrong. Semi-circular नहीं है, याद रखिएगा. Semi-circular form में जो caves है, it is in Ajanta, not in Ellora. Ellora में there is a hell lot of space, there are large space available, hence जो caves है वो बहुत ही scattered है. So this statement is wrong. Hence the right answer is D because हमें यहाँ पर false बताना है कि which one is the false statement. ठीक है. Then moving to the fourth one, that is वेसारा style के बारे में आपको बताना है कि कौन सा statement right है. The first statement is Vesara is the hybrid यानी mixture of Nagar and Dravida style and it is developed between Vindhyas and Krishna, Vindhya mountain range and Krishna river के बीच वाले लोकेशन पे. This is absolutely right. Next, in this style that is Vesara style में अगर हम देखेंगे तो विमान जो होता है that is गर्भगृह के ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है वो लो हाइट का होता है कंपेयर टू द्रविड़ा स्टाइल. एब्सोल्युटली राइट है.
and it features the mixture of शिखर of नागर style and मंडपा of the द्रविड़ style. Absolutely right. ठीक है. So याद रखिएगा यहाँ पर जो विमान होता है ये कम छोटे हाइट का होता है in comparison to विमान in the द्रविड़ style. We are talking about वेसारा style. Then third one is Hosala and the Chalukya rulers contributed in patronaging this system. Absolutely right. ये गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका वाला जो इलाका है यहाँ पर ये प्रोमिनेंट था. नॉट गुजरात, बेसिकली कर्नाटक एंड महाराष्ट्र वाला इलाका, वहीं पर चालुक्याज और होसलाज ने इसको सपोर्ट भी किया है, पैट्रोनेज किया है. हैंस ऑल द थ्री स्टेटमेंट इज राइट. सो द राइट आंसर इज डी, 1, 2 and 3. Now moving to the fifth one. The fifth one is related to stupa structure से related, stupa architecture and symbolic meaning. पहला, मेदी क्या होता है? मेदी इज द प्लेटफॉर्म. जो भी स्तूप बनाया जाता है जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर, दैट प्लेटफॉर्म इज कॉल्ड मेदी. तो स्टेटमेंट बोलता है इट इज अ प्लेटफॉर्म ऑफ स्तूपा ऑन विच द मेन अंडा दैट इज डोम इज मेड. एब्सोल्युटली राइट. देन हर्मिका क्या होता है? द रेलिंग लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द स्तूपा. एब्सोल्युटली राइट. जब भी आप स्तूप बनाते हैं जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर है, दैट प्लेटफॉर्म इज कॉल्ड मेदी. स्तूप के ऊपर एक सर्कुलर पैटर्न में एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हर्मिका. एंड देन व्हाट इज छत्रा? इट इज द सिंबल ऑफ यूनिवर्सल स्ट्रेंथ, यूनिवर्सल सॉवरेनिटी एंड हाई अथॉरिटी ऑफ द बुद्धा, जिसके ऊपर आपका वो छत्रा बनाया जाता है. राइट. So this is absolutely right. All the three is right. So hence it is D. और याद रखिएगा स्तूपा आर्किटेक्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. एनसीईआरटी के बुक में भी इमेज और इमेज का नाम दिया गया है. इमेज में ही एवरी पार्ट हैव बीन नेम्ड. सो वो ये आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मेंस में हमें डायग्राम बनाना होता है और प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन उसमें से आता है. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू पंचयत्न. एंड पंचयत्न ऑलरेडी यूपीएससी ने पास्ट में ये क्वेश्चन पूछ रखा है. Right. So this is basically a previous year question. What is Panchayatna? It is a type of Nagar style where there is a main deity temple or supported with the 4 subsidiary temple. छोटा छोटा और, इसलिए आप कोई भी नागर स्टाइल में चाहिए, मेन भगवान है और यहाँ पर जो छोटा छोटा और भी 4 गणेश जी, तो दुर्गा माँ, तो कोई हनुमान जी, तो किसी और भगवान का भी मूर्ति आपको मिलेगा. सो दिस इज द नागर स्टाइल का पंचयत्न स्टाइल. So the right answer is B. In this, the main temple is surrounded by the 4 other subsidiary temple. ठीक है. Moving to the next question, with reference to Mughal architecture, consider the following pair. आपको यहाँ पर कुछ बिल्डिंग और सामने उसके रूलर्स का नाम लिखा गया है. हमें ये बताना है कि कौन सा राइट है. Now, the double dome is the feature of हुमायूं's टोम. एब्सोल्युटली राइट. हुमायूं के टोम पे डबल डोम स्ट्रक्चर है. देन पित्राद्वारा स्टाइल, दिस इज इन द टोम ऑफ इतमत उद्दौला. इतमत उद्दौला का जो टोम है, इट इज फेमस फॉर पित्राद्वारा स्टाइल. पित्राद्वारा मतलब वो छोटा छोटा पत्थर जो चिपकाया जाता है, चमकीला पत्थर अलग अलग कलर का, दैट इज द थिंग. देन बुलंद दरवाजा अकबर के टाइम का है. एब्सोल्युटली राइट. एक्सटेंसिव यूज ऑफ रेड सैंडस्टोन, शाहजहां नहीं. शाहजहां के टाइम पर व्हाइट मार्बल बहुत फेमस हो गया था. शाहजहां से पहले यानी टिल द टाइम ऑफ जहांगीर रेड सैंडस्टोन वाज प्रोमिनेंट, बट फ्रॉम द टाइम ऑफ शाहजहां व्हाइट मार्बल बहुत फेमस हो गया है. ठीक है. सो फोर्थ वन इज रॉन्ग. 1, 2, 3 इज राइट. सो ओनली 3 पेयर आर राइट. सो द राइट आंसर इज सी. देन मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज 8th वन. 8th बोलता है कि आपको assertion और reasoning दिया है. We have to see which one is right. Assertion: the period of Shah Jahan is considered to be the golden age of the Mughal architecture. Absolutely right. Right. Reason ये है because शाहजहां ने prioritize कर दिया था the use of marble instead of red sandstone in architecture and made excellent use of Petrodora. Absolutely right. And because of this, it is called the golden age. So both are right and R is the explanation of A. So the right answer is A. Right. So A is the right answer. Moving to the next one. So we have 9th question. The 9th question is with reference to the Mughal fort and mosque. ठीक है. So the question is related to Mughal fort and mosque. आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें राइट है. The statement is the structure like
झरोका दर्शन and Diwan-e-Am in the Agra fort were built by Akbar. Is it right? Yes, this one is absolutely right. It is built by Akbar. The second one is double dome and the tall minaret. Double dome and tall minaret, जैसे ताजमहल उसके बाजू में भी जो एक बड़ा बड़ा सा पिलर जैसा बनाया जाता है, that is called minarets. The tall minaret have been used in the Jama Masjid of Delhi, which is the pinnacle of the Mughal mosque architecture. Absolutely right. मुगल्स लोगों का जो भी मॉस्क बनाया गया है मुगल्स लोगों के टाइम पे या मुगल्स लोग की तरफ से, everywhere you will find this thing, that is tall minaret and the double dome structure. So this one is also right. Moving to the third one, Badshahi Mosque of Lahore, built by Aurangzeb, is known for its grandness, and which is the last great monument before the decline of the Mughal architecture. Absolutely right. औरंगजेब के बाद तो मुगल्स लोग वीक पड़ गए, तो जो भी स्ट्रक्चर बना वो औरंगजेब तक, इनफैक्ट जो भी स्ट्रक्चर बना वो शाहजहां तक ही था, बिकॉज Aurangzeb did not encourage or did not patronize this architectural work to a greater extent. But anyway, जो थोड़ा बहुत भी उसने बनाया उसमें बुलंद शाही लाहौर में जो बुलंद शाही मॉस्क है, this is considered to be the last grand or great structure by the Mughals. So this is also right. So the right statement is D. I mean answer is D, 1, 2 and 3, all the 3. Moving to the next question. This is related to Indo-Saracenic या Saracenic architectural style. Now what is this? Indo मतलब इंडिया का, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही स्ट्रक्चर आ जाता है, हिंदू स्टाइल या मुस्लिम स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, एंड Saracenic मतलब होता है यूरोपियन. सो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, राइट. So the question is, with reference to the Indo-Saracenic architectural style, consider the following statement. First, this style was the unique blend of Indian, that is Hindu and Muslim, and European Gothic style. European style को हम Gothic style बोलते हैं, और Indian style, ये दोनों का mixture है, that is what Indo-Saracenic style. ठीक है. So this is absolutely right. Second statement, it incorporated Indian elements like dome and chhatris, arc and jhallis, right. इंडिया से क्या है, अब ये जो नया आर्किटेक्चर स्टाइल आया उसमें यूरोपियन यानी गोथिक स्टाइल और इंडियन स्टाइल, तो इंडियन स्टाइल का क्या क्या चीज़ कॉपी किया गया है, तो इट इज़ डोम, छतरीज, आर्क्स, झल्लीज एंड ऑल दोस थिंग. एब्सोल्युटली राइट. एंड इंडो सैरसनिक स्टाइल का मद्रास हाई कोर्ट इज द बेस्ट एग्जाम्पल, एंड छत्रपति शिवाजी टर्मिनल इन मुंबई इज द बेस्ट एग्जाम्पल. एब्सोल्युटली राइट. सो ऑल द 3 इज राइट. सो दिस इज 1, 2 एंड 3. डी इज द राइट आंसर. ठीक है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, द क्वेश्चन नंबर 11th. इसमें आपके पास है कुछ बिल्डिंग का नाम और सामने है आर्किटेक्चरल स्टाइल. आपको ये बताना है विच वन इज रिलेटेड टू विच वन. फर्स्ट, विक्टोरिया मेमोरियल. विक्टोरिया मेमोरियल इज रिलेटेड टू व्हाट? सो इट इज रिलेटेड टू, द विक्टोरिया मेमोरियल इज रिलेटेड टू इंडो ब्रिटिश क्लासिक्स. इसको यहाँ पर रख दीजिए, वहाँ रख दीजिए, 2 मिनट. हाँ रख दीजिए. सो दिस वन इज रिलेटेड टू इंडो विक्टोरिया मेमोरियल की अगर बात करें तो दिस वन इज रिलेटेड टू व्हाट? इससे रिलेटेड हमें मिलेगा विक्टोरिया मेमोरियल इज द ब्लेंड ऑफ रेनेसेंस एंड मुगल्स, राइट. सो 1 का थर्ड वन इज द राइट. सो वैसे तो इसी से मिल जाता है, डी, ए इज द राइट आंसर. ठीक है, क्योंकि 2 का बी है, 2 का राष्ट्रपति भवन इंडो ब्रिटिश क्लासिक है. एब्सोल्युटली राइट. 3 का 4 दैट इज गेटवे ऑफ इंडिया, इंडो सैरसनिक स्टाइल है, राइट. एंड बॉम्बे यूनिवर्सिटी इज द नियो गोथिक स्टाइल. एब्सोल्युटली राइट. सो 11th का राइट आंसर इज ए. डन. देन वी हैव नेक्स्ट वन. दिस इज रिलेटेड टू अ क्वेश्चन नंबर 12. दिस इज रिलेटेड टू असर्शन एंड रीजनिंग. इसमें है द असर्शन इज द प्लानिंग ऑफ लुथियंस दिल्ली, दैट इज न्यू दिल्ली जो लुथियन ने बनाया था, shows the honor of both या shows the harmony of both the British imperial and Indian tradition. मतलब लुथियंस दिल्ली को अगर आप देखेंगे तो आपको ब्रिटिश इंपीरियलिज्म या इंपीरियलिस्टिक फीचर एंड इंडियन ट्रेडिशनल फीचर ये दोनों दिखता है. द आंसर इज राइट. सो assertion is true. Reason,
एडवर्ड लुथियन एंड हर्बर्ट बेकर यूज द सांची डोम। इंडियन क्या दिखता है, सांची जो स्तूप है ब्रिटिशर्स का, वहाँ का डोम हमने कॉपी किया है। राजस्थानी छतरी जो है उसको कॉपी किया है in the making of the Viceroy's house, which is currently the Rashtrapati Bhavan, and this is absolutely right. So A is right, R is right, and यही रीज़न है इसके लिए हम बोलते हैं, देखिए छतरी सांची का कॉपी किया है, राजस्थान का हमने सर्टन फीचर को कॉपी किया है मतलब बोरो किया है, एंड हेंस वी से कि जो लुथियंस का दिल्ली है इट इज़ द हार्मनी ऑफ इंडियन ट्रेडिशन एज वेल एज ब्रिटिश इंपीरियलिज्म. सो बोथ आर राइट एंड रीजनिंग इज द करेक्ट. I mean R is the correct reason of A. So the right answer is A, that is A1. ठीक है. Now moving to the next question. Question number 13. Question number 13 is related to Buddha sculpture. तो इसमें आपको बताया गया है थीम, जब बुद्धा से रिलेटेड बुद्धा की स्कल्पचर की बात आती है तो वी हैव 3 डिफरेंट स्टाइल, गंधार स्टाइल, अमरावती स्टाइल एंड ऑल्सो मथुरा स्टाइल. तो ये तीनों स्टाइल के फीचर्स के बारे में है. गंधार स्टाइल ने बुद्धा को शो किया है एज अ फिजिकली वेल बिल्ट एंड वेरी वेवी हेयर है, बड़ा सा हेयर, खुला हेयर, सिमिलर लाइक द ग्रीक गॉड अपोलो. इज इट राइट? एब्सोल्युटली राइट. गंधार स्टाइल में गौतम बुद्ध को ऐसे शो किया गया है. मथुरा स्टाइल हैज लेड द एम्फेसाइज ऑन द मस्कुलैरिटी एंड द चेयरफुल पोस्चर ऑफ द बुद्धा. बुद्धा का चेयरफुल पोस्चर मस्कुलैरिटी के ऊपर, एंड दीज आर मेड इंटायरली ऑफ द इंडिजिनस रेड सैंडस्टोन. यस, एब्सोल्युटली राइट. एंड थर्ड कम्स द अमरावती स्टाइल. ये नरेटिव स्कल्पचर है. एब्सोल्युटली राइट. अमरावती स्टाइल इज फेमस फॉर नरेटिव स्कल्पचर, जहाँ पर आपको नरेशन दिया गया, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल गौतम बुद्ध का जन्म हो रहा है, वाइट हाथी है ना, जो महामाया उनकी मदर थी वो बेड के ऊपर सोई है, सपना उनको दिख रहा है एंड ऑल दोस थिंग. तो ये जो नरेशन है, नरेशन के थ्रू इंफॉर्मेशन दिया गया है और दिस पर्टिकुलर स्कल्पचर इज मेड. So hence even this one is right. So the right answer is 1, 2 and 3. All the 3 are right. So the right answer is D. ठीक है. So now moving to the 14th one. The 14th question is related to bronze sculpture of the Chola dynasty. इसमें कहा गया है कि the statue were mainly made using the lost wax technique. Absolutely right. याद रखिएगा, चोलाज लोगों में जो ब्रॉन्ज स्ट्रक्चर बनाया जाता है, स्कल्पचर जो कुछ भी बनाया गया है स्कल्पचर, ऑल दीज आर मेड अप ऑफ लॉस्ट वैक्स टेक्निक. नेक्स्ट सेकेंड, द स्टैच्यू ऑफ नटराज दैट इज शिवा राइट हैंड इज द अभय मुद्रा. शिवा का राइट हैंड अभय मुद्रा को सिंबलाइज कर रहा है. एब्सोल्युटली राइट. सो 1 and 2 इज राइट. नाउ थर्ड वन, इन चोला ब्रॉन्ज स्ट्रक्चर ओनली द रिलीजियस डीटी आर डिपिक्टेड. There is a complete absence of the depiction of the king and the queen. Absolutely wrong. राजा को, रानी, इन लोगों का मूर्ति भी बनाया गया है, किंग, क्वींस एंड डिवोटीज का भी स्कल्पचर बनाया गया है. इट इज़ नॉट जस्ट ऑफ डीटी, इट इज़ ऑल्सो ऑफ डिवोटी, किंग्स एंड क्वींस. सो थर्ड वन इज रॉन्ग. सो 1 and 2 इज राइट. सो द राइट आंसर इज A. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज 15th क्वेश्चन. इसमें है अगेन assertion and reason. पहला assertion, the Gupta period is called the classical age. 15th question, the Gupta period is called the classical age of Indian sculpture, where emphasis was placed on the use of clothing instead of nudity and on the spiritual halo. यानी गुप्ता एज में है ना, क्लोथिंग के ऊपर फोकस ज़्यादा था इंस्टेड ऑफ न्यूडिटी ऑफ द स्कल्पचर. एब्सोल्युटली राइट. Then next comes, unlike the Maurya sculpture, only the influence of Buddha is visible in the Gupta sculpture. Wrong. Hinduism का, हिंदूज लोगों का भी तो इन्फ्लुएंस दिखता है ना, बुद्धा. एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्राह्मणिकल यानी हिंदू जो इन्फ्लुएंस है और या फिर हिंदू स्कल्पचर जो है वो मिसिंग है, रिमेन सबऑर्डिनेट. नहीं, गुप्तास के टाइम पे हिंदू को इनफैक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने भी लग गया था. ठीक है. So the reasoning is wrong. Reasoning is wrong. Assertion is right. So the right answer is C. C is the right answer. ठीक है, for the question number 15th.
Now question number 16th, this is related to prehistoric rocks से related. With reference to prehistoric rock painting of Bhimbetka, consider the following statement. Pehla, the red and white color have been primarily used in the painting of Bhimbetka, which were obtained from the minerals. Is it right? Yes, this is absolutely right. Then the second question, these paintings were depicted. These paintings were depicted, this painting only depicts hunting scene. There is a complete absence of human social activity. गलत. ये आपको बहुत easily information दिखेगा कि human social activity भी symbolize किया गया है, diagram में show किया गया है. तो this statement is wrong. और इनफैक्ट अगर आपने ये ना भी पढ़ा है तो याद रखिएगा, whenever there is an extreme statement in UPSC like only and all such type word are used, generally though the statement is wrong. ठीक है, सो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है. मूविंग टू द थर्ड वन. वैसे अब आप इजिली कर सकते हैं बिकॉज सेकेंड रॉन्ग है तो वन और थर्ड 1 and 3 राइट होगा. सो सी इज द राइट आंसर. बट एनी वे द स्टेटमेंट इज कंपेयर टू द अपर पैलेयोलिथिक period, the painting of the Mesopaleolithic periods are smaller in size. Yes, absolutely right. Right. So smaller size का painting हो रहा था. तो 1 and 3 is right. So the right answer is C. Then moving to the next question, that is Ajanta cave से related. अब आपको फिर बताना है कि correct statement कौन सा है. पहला, these paintings are made using the fresco technique, in which the color are applied on the dry plaster instead of wet plaster. ठीक है. Next, the blue color, that is lapis lazuli, used in the painting was obtained locally from the Sahyadri hills. ठीक है. The depict shows only the deep shadow have been used on the edge of the figure to create the rhythm of the line and the 3 dimension. 3 dimension ये वाला गलत होता है. So there is only 2, 1 and 2 is right. So we will say कि only 2 is right. So only the 2 are right. Then moving to the next question, again this is the question number 18th. ये है again आपका assertion and reasoning. Assertion is, it is a narrow perspective to view Ajanta painting only as religious painting. अजंता के पेंटिंग को सिर्फ religious painting के तौर पर देखना is the narrow perspective of looking at this particular painting. Yes, right. क्यों? Along with the depiction of Jataka tales, these painting provide the detailed information about the contemporary custom. उस समय के custom, jewelries, है ना, court life, foreign contacts, everything were depicted on this painting. Yes, क्योंकि ये सारा चीज पेंटिंग में शो किया जाता था, hence पेंटिंग को सिर्फ रिलीजियस बोलना गलत है. बिकॉज बोथ द स्टेटमेंट इज राइट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सो द राइट आंसर इज ए. सो 18th का राइट आंसर है ए. ठीक है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज related to Ajanta, again the painting of Ajantas. इसमें है कि we have पद्मपानी बोधिसत्वा. कुछ पेंटिंग और उसके फीचर्स को आपको रिलेट करके बताना है कौन सा सही है. पद्मपानी बोधिसत्वा ये क्या है? इट इज द इमोशन ऑफ कंपैशन एंड पीस होल्डिंग द ब्लू लोटस इन हैंड. 1 का 2 हो गया, तो 1 का 2 हो गया, करेक्ट है. डाइंग प्रिंसेस ये क्या है? द poignant scene of the Buddha's detachment and the material renunciation. सेकेंड का 1 इज राइट. सो द राइट आंसर इज ए. ठीक है. और महापरिनिर्वाण क्या है? तो इट इज अ मैसिव सीन ऑफ बुद्धास डेथ एंड स्पिरिचुअल लिबरेशन. ठीक है, स्पिरिचुअल रिवलेशन. थर्ड का 1 है. सो द राइट आंसर इज ए. ए इज द राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 19th. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20. अब इसमें अगेन आपको राइट स्टेटमेंट बताना है कि विच वन इज द राइट स्टेटमेंट. फर्स्ट, so the question is related to the historical importance of the rock art. Consider the following statement. The first statement is,
The Bhimbetka caves in the Madhya Pradesh were discovered by V.S. Vakankar, right. Next, the geometric figure and the scene of the collective dance were found in the rock painting of Lakhudiyar, ठीक है, in Uttarakhand. Again, this is right. Next, in the painting of Kupgallu in Karnataka in South India, only the Neolithic. Again, because देखिए only लिखा हुआ है, extreme statement है. अगर आपको कुछ नहीं आता है तो भी आप बोल सकते हैं this is wrong. 99% आप मान के चलिए यूपीएससी में whenever you read any statement and you get कि स्टेटमेंट एक्सट्रीमनेस को शो कर रहा है तो वो आमतौर पे गलत ही होगा, ठीक है. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो द राइट स्टेटमेंट इज 1 and 2, सो द राइट इज A, 1 and 2 only. Now moving to the next one, that is question number 21. Question number 21 is related to, it says, with reference to the comparative context of Mughal and Rajasthani painting style, consider the following statement, right. The first statement is Mughal paintings was mainly focused on aristocratic and courtly scene, while religious and devotional theme such as Radha Krishna predominated in the Rajasthani style, right. तो यहाँ पर बोल रहा है कि मुगल्स लोगों में एरिस्टोक्रेटिक स्टाइल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस था, whereas राजस्थानी स्टाइल में वी विल सी राधा कृष्णन डोमिनेंस. एब्सोल्युटली राइट, ठीक है. देन उसके बाद में द एक चश्म, that is a single profile, was the characteristics of the Mughal style, whereas in the Rajasthani style the faces were shown as more emotional and tender. Yes, absolutely right. So this is also right. Rajasthani style में एक फोकस था कि चेहरे के ऊपर, फेस के ऊपर इमोशन को सिंबलाइज करना है, शो करना है, ठीक है. एंड थर्ड कम्स द फेमस वर्क ऑफ किशनगढ़ स्टाइल, दैट इज बानी थानी. ये आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, राइट. बानी थानी इज कॉल्ड एज मोनालिसा ऑफ इंडिया. एब्सोल्युटली राइट. इन विच निहाल चंद has depicted the romantic beauty. Absolutely right. And this is one of the very important information जो आपको easily NCERT में भी मिलने वाला है. So all the three is right. So question number 21 का the right answer is D, right. So the right answer statement is D. Now moving to the next statement, question number 22, regarding the Basohi and Kangra style of Pahari स्कूल ऑफ पेंटिंग. पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग इज इन उत्तराखंड वाला रीजन. यहाँ पर जो दो स्टाइल राइज करता है दैट इज बसोही एंड कांगड़ा स्टाइल. आपको इसके कंटेक्स्ट में डिफरेंस बताना है ना. विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंस इज करेक्ट. फर्स्ट, द बसोही स्टाइल इज नोन फॉर इट्स वाइब्रेंट कलर एंड बोल्ड लाइन्स, while Kangra style is famous for its tenderness and minute detail. Absolutely right. Next, the Kangra style is mainly based on the themes of the Naika Bheda, right, and Geet Govind. Absolutely right. The third one is Basohi style was patronized by Raja Sankar Chand. Raja Sankar Chand? No. So hence the right answer is A, 1 and 2 only. फिर the next question, that is question number 23. We have some DAS form और उससे related कुछ feature. आपको बताना है कौन सा feature right है. कथकली. What is कथकली? देखिए, कथकली is basically a symbolic depiction of the struggle between the good and evil. गुड एंड इविल के बीच में डिफिक्शन शो किया जाता है कथकली में, ठीक है. सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कथकली. आपको डांस फॉर्म, क्लासिकल डांस फॉर्म पढ़ना होता है और जब व्हेन यू रीड द फीचर ऑफ दीज क्लासिकल डांस फॉर्म यू विल गेट द इंफॉर्मेशन कि इट सिंबलाइजेज और इट डिपिक्ट्स द स्ट्रगल बिटवीन द गुड एंड बैड, ठीक है, फेशियल कलर, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू. सो 1 का सेकेंड है, ठीक है. देन उसके बाद में वी हैव भारतनाट्यम. ये एकाचार्य, वन डांसर परफॉर्मिंग द सेवरल रोल्स, राइट. सो 2 का 1 हो गया. देन वी हैव सत्रिया. सत्रिया डांस यूज ऑफ
Ashtapadi and Borgit, absolutely right. And then we have Kuchipudi. Kuchipudi is the dancing by placing the feet on the brass plate. This is the important feature of Kuchipudi. ठीक है, तो हो गया 4 का 4, 4 का 4, 3 का 3, 2 का 1 and ये. So the right answer is A. ठीक है जी. Then next है question number 24. We have assertion and reasoning. Assertion says the Bengal School of Art opposed the Western oil painting technique. Yes, this is right. याद रखिएगा, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट ऑयल पेंटिंग को अवॉइड करता था इन द अर्ली 20th century and revived the traditional Indian method. Absolutely right. Next comes, इसी से रिलेटेड है, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट से रिलेटेड है. वी हैव अभानिंद्रनाथ Tagore introduced the wash technique inspired by the Japanese art so that the mystical haze can be brought to an Indian painting. Yes, this is right. Both are right. और याद रखिएगा ये अभानिंद्रनाथ Tagore, he is related to Bengal painting. He is associated with wash technique. ठीक है, और ये wash technique किससे इंस्पायर था? Japanese art से. Both are right and R is the explanation of A as well, right? So the right answer is A, that is that one, this one. R is the correct explanation of A. So we are done with question number 24 as well. Now moving to the next question, that is 25. You have to tell me कि कौन सा पेयर यहाँ पर rightly explained है. बिहू आसाम का, related to agriculture festival, right. Then we have Chow dance, only West Bengal? No, Chow is also prominent in Odisha and there, so second is wrong. Ghumar Rajasthan का है, by Bhil tribes and Rajput women's. Yes, absolutely right. सत्रिया मणिपुर में, सत्रिया आसाम वाले लोकेशन में ज़्यादा फेमस है, तो only 2 is right. 1 and 3 is right, 2 and 4 is wrong, so only 2 pair. So B is the right answer for question number 25. Now moving to the next question, that is question number 26. It says, with reference to the comparative difference between the Hindustani and the Carnatic music style, या classical music, consider the following statement, right? तो यहाँ हमें क्लासिकल म्यूजिक के कंटेक्स्ट में, क्लासिकल म्यूजिक कौन सा, हिंदुस्तानी एंड कर्नाटिक, इन दोनों के कंटेक्स्ट में डिफरेंस बताना है. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? Hindustani music is primarily based on rag, melody, absolutely right. While in Carnatic music, more emphasis is laid on tal. Yes, this is absolutely right, and mathematical structure. So 1 is right. Hindustani is famous for rag and Carnatic is famous for tal, right? Moving to the next one, the tradition of gharanas is essentially found in Carnatic music. No, gharanas is essentially found in Hindustani music, not Carnatic. ठीक है जी. While Hindustani music is a free and flexible style, नहीं. तो second is wrong. 1 is right, second is wrong. Third, in Hindustani music, the time theory is strictly followed, while in Carnatic music, the restriction of time is not mandatory on rags. Yes, absolutely right. So we will see 2 is wrong, 1 and 3 is right. So we have C as the right answer. ठीक है जी. Yes. Moving to question number 27. So question 27 says कि which of match the classification of the musical instrument and their specificities. मतलब what are the special features of these particular area, आपको ये सब बताना है. पहला Tata, then Shushira, then Avnandha, and then we have Ghana. These are the different musical instruments और उससे रिलेटेड हमें जवाब बताना है कौन सा सही है. देखिए, इंस्ट्रूमेंट प्लेड बाय वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को वाइब्रेट करके जो हम लाइक फॉर एग्जांपल वीणा हो गया, ये सब को बजाकर जो आप वॉइस लाते हैं वो कोड फोन्स बोलते हैं, कोडोफोन्स, राइट, कोडोफोन्स. तो 1 का हो गया 3, इफ 1 का है 3 तो राइट आंसर इज ए, यहीं से निकल कर आ जाता है. ठीक है.
स्ट्रिंग बजाकर जो आप म्यूजिक क्रिएट करने वाले हैं, दैट इज दैट वन. ठीक है. So the right answer is A for the question number 27. Moving to the next one, we have question number 28. This is related to folk theatre. Now art and culture में folk theatre also holds a very important position. Now the question is, with reference to folk theatre, form of the different region of India, consider the following statement. You have to consider the statement and tell me which one is right. Like यक्षगना कर्नाटका का है, हाँ जी ये तो सही है. इट इज़ द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द डांस, म्यूजिक, डायलॉग एंड द ornate costume primarily based on the mythological story. Yes, absolutely right. कुडियट्टम केरला में है, हाँ जी ये भी राइट है. इट इज़ द एंशिएंट फॉर्म ऑफ संस्कृत ड्रामा which has been declared an intangible heritage of humanity by UNESCO. Yes. तमाशा महाराष्ट्र का है. आपसे ये डायरेक्ट नाम पूछेगा, इसका लोकेशन, फोक डांस एंड उसका लोकेशन आपको पता होना चाहिए. सो तमाशा इज फेमस इन महाराष्ट्र. इन दिस द वुमेन ऑफ कोल्हाटी कम्युनिटी, कोल्ही कम्युनिटी बोलते हैं, कोल्हाटी कम्युनिटी प्ले अ मेन रोल and there is a prominent use of lavani music. Yes, lavani music is also famous in Maharashtra. ठीक है. So all the three is right related to this this one, folk dance, folk theatre से related. ठीक है जी. So we are done with this one. 1, 2 and 3 is right. So all the 3 is right. So the right answer is D. Right. अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ये क्वेश्चन में हमारा फोकस है, द फोकस इज ऑन टू टच ऑल द सेगमेंट्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर. डांस के बारे में बात करेंगे, थिएटर के बारे में बात करेंगे, विल ऑल्सो टॉक अबाउट दी पपेट्री के बारे में, जो खिलौना डांस टाइप का होता है, अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग एज वेल. नाउ कठपुतली राजस्थान का है. इट इज़ अ स्ट्रिंग पपेट इन विच द लेग्स आर नॉट यूज्ड. क्या ऐसा है? नहीं. नेक्स्ट, रावण छाया ओडिशा का है. हाँ जी, इट इज़ अ फेमस ग्लव पपेट फॉर्म मेड इंटायरली ऑफ लेदर. सी सो एक चीज़, राजस्थान का कठपुतली डांस में स्ट्रिंग पपेट इन विच द लेग्स आर नॉट यूज्ड. इट इज़ ओनली द हैंड्स विच आर यूज्ड. देन रावण छाया उड़ीसा का है. इट इज़ अ फेमस ग्लव पपेट मेड इंटायरली फ्रॉम द लेदर. नहीं, ये गलत हो जाएगा. एंड टोगालू गुम्बेयट्टा कर्नाटका का इज द शेडो पपेट इन विच द कलर लेदर फिगर इज यूज्ड. हाँ जी. सो 1 and 3 is right. So the right answer is, we have to tell ki how many pairs are right. So 2 pairs are right. That is only, B is the right answer. ठीक है, 2 pairs are right. Now, so we are done with 29 questions. Now coming to the next question, that is, with reference to the ancient and the medieval Indian literature, consider the following. So the next question is related to literature. You will get कि कौन सा segment आपको touch करना है when it comes to art and culture. ठीक है. So the very first is related to Sangam literature. Sangam literature, it is an ancient Tamil literature in which the description of the subject like Agam, interior love, and Puram, that is exterior war, are found. Yes, Sangam literature में ये चीज़ mention है, Agam, Puram and all this thing. Then classical language, currently there are 11 languages have been granted the status of the classical language. Yes, absolutely. Last year ही 5 language को मिला है. पहले से 6 क्लासिकल लैंग्वेज था. लास्ट ईयर 2025 में 5 लैंग्वेज गॉट द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज. सो सम टोटल वी हैव 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस. एंड थेरी घटा, it is the part of the Buddhist Theri Ghat. It is the part of the Buddhist literature which is the collection of the song composed by bhikkhunis depicting the spiritual experience of women. Yes, absolutely right. So 1, 2 and 3, all the 3 are right. So the right answer is D. ठीक है. So 30 का हमारा जो right answer है, it is D. So now next again, it is one of the very prominent section of art and culture. ये है philosophy. तो आइए philosophy के questions को देख लेते हैं. With reference to the 6th school of philosophy, that is Shad Darshan,
in Indian philosophy, consider the following statement. पहले Samkhya philosophy is given by Kapila, right? Based on the dualism of Prakriti and Purush and Prakriti, दो dualism के बारे में बात किया गया है in Samkhya philosophy, and it is considered to be the most ancient philosophy. Absolutely right. Then उसके बाद में न्याय फिलॉसफी जो गौतम ने दिया है उसका एक्सप्लेनेशन है. इट एम्फसाइजेस द अटैचमेंट एंड द सेल्वेशन. इसका अटैचमेंट और अटेनमेंट ऑफ द सेल्वेशन थ्रू लॉजिकल थिंकिंग. यस, न्याय फिलॉसफी टॉक्स अबाउट द लॉजिकल थिंकिंग एंड इट वाज गिवन बाय गौतम. यस, एब्सोल्युटली राइट. देन वैशेषिका फिलॉसफी की बात करें, वो कन्नड़ ने दिया था एंड दिस एम्फसाइज ऑन द थ्योरी ऑफ एटोमिज्म. ये एग्जाम में यूपीएससी में ऑलरेडी पास्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है फिलोसॉफी से रिलेटेड एंड दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट दैट इज कन्नड़ का जो वैशेषिका फिलॉसफी है दिस इज बेस्ड ऑन एटोमिज्म, राइट. देन सो दिस इज राइट. देन उसके बाद में उत्तर मीमांसा बाय भद्रयाना and it is also called as Vedanta. Uttar Mimamsa is also called Vedanta, which focus on the path of the knowledge of Upanishad. Yes, absolutely right. So all the four is right. So we will see the right answer is D. ठीक है. So right answer यहाँ पर in this question number is 31. We have D. Moving to the next question. In comparative context of philosophical principles of Buddhism and Jainism, we have the philosophical principle Buddhism, Jainism. इसके comparative context में बताना है कि कौन सा statement यहाँ पर right है. पहला, according to Jainism, अनेकानंतवाद is the theory of plurality. Plural के बात करना है, अनेकानंद अनेक है, राइट. वाइल बुद्धिज्म का जो ये प्रतीत या मुत्यपदा एक्सप्लेन्स ऑन द इफेक्ट, मतलब कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर फोकस करता है. यस. नेक्स्ट, बुद्धिज्म कंप्लीटली रिजेक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल, राइट, वाइल जैनिज्म एक्सेप्टेड द प्रेजेंस ऑफ सोल. यस, दिस इज ऑल्सो राइट. याद रखिएगा, जैनिज्म हिंदुइज्म के कई बातों को मानता है, लाइक रीइनकारनेशन के बारे में बात करता है ना, एंड दे एक्चुअली एक्सेप्ट दिस सोल एंड ऑल दोस थिंग. Both the religion challenged the supremacy of the Vedas and supported the path of the non-violence, but the practice of ahimsa in Jainism is more stringent than Buddhism. Yes, absolutely right. So all the three is right. We will say the right answer is D. So question number 32 में the right answer is D. 33, with reference to the medieval bhakti period. Now we are into the medieval age. Now with reference to the bhakti movement, consider the following statement. Shankaracharya propounded Advaitvad, in which Brahma and Jeev are considered as one. भगवान शंकराचार्य ये कहते हैं ना कि एक है और हम जो है द्वैत नहीं है, अद्वैतावाद की बात करते हैं. देयर इज नो ड्यूअलिज्म, देयर इज नो टू, वी आर अ पार्ट ऑफ गॉड. हम भगवान के ही एक अंश है. सो दिस इज व्हाट शंकराचार्य यूज्ड टू से. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट. देन द सेकंड, रामानुजाचार्य इनका है विशिष्ट अद्वैत फिलोसॉफी है. बिलीव्ड दैट द जीव इज अ पार्ट ऑफ द गॉड बट इट इज ऑल्सो डिस्टिंक्ट फ्रॉम गॉड, राइट, एब्सोल्युटली राइट. एंड थर्ड इज द्वैतवाद, टू डिफरेंट है. ये क्या है? तो माधवाचार्य ने प्रीच किया है द्वैतवाद, टूइज्म को, ड्यूअलिज्म का, अकॉर्डिंग टू विच गॉड, सोल एंड द वर्ल्ड आर द थ्री सेपरेट एंटिटी. ये द्वैत दो की बात कर रहा है, अद्वैत, राइट, और ये विशिष्ट अद्वैत, अलग नहीं है लेकिन फिर भी गॉड हमसे विशेष है, राइट. सो ऑल द थ्री इज राइट एंड द राइट आंसर इज डी. सो इन द क्वेश्चन नंबर वी आर डन विद द क्वेश्चन नंबर 33. इसमें वी हैव डी एज द राइट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion एंड रीजनिंग का. assertion है सूफी मूवमेंट एंड भक्ति मूवमेंट
are played an important role in the development of the social harmony and religious tolerance in medieval India. Right, this is right. Reasoning is both the movement rejected the dominance of the rituals and priest and gave the message of love and humanity through the regional language. Yes, absolutely right. दोनों ही right है. A is right, R is right, and R is also the right explanation of A. So the right answer comes the A. So in the question number 34, we have A as the right answer. Then question number 35, consider the following regarding the silsila. Silsila Sufism में होता है, right? Silsila and their characteristics. Christy Silsila emphasize on the spiritual upliftment through music, psalm, dance, है ना. निज़ामुद्दीन औलिया, निज़ामुद्दीन स्टेशन जो है, निज़ामुद्दीन औलिया वही जो सूफी सेंट है, उन्हीं का मकबरा है वहाँ पर, है ना. Then so was a prominent saint? Yes, absolutely right. Then the next question comes. This one is related to Suhrawardi Silsila. Unlike the Srishti, this Silsila did not consider the holding of the state office and collection of the wealth as bad. Yes, Srishti में याद रखेगा, सृष्टि में डांस होता था, म्यूजिक होता था, लेकिन टेकिंग ऑफ द मनी, स्टेट ऑफिस, किसी भी तरीके से आप पावर के साथ एसोसिएट होंगे, वॉज कंसिडर टू बी रॉन्ग. बट इन द अदर वन, दिस वन, इसमें इट वॉज नॉट कंसिडर टू बी अ रॉन्ग. देन नक्शबंदी सिलसिला, दिस इज द मोस्ट ऑर्थोडॉक्स सिलसिला विच अपोज द म्यूजिक एंड एम्फेसाइज्ड. यस, नक्शबंदी इस तरीके से डांस, म्यूजिक, इसको भी बहुत अपोज करता था. तो ऑल द थ्री इज बेसिकली राइट. सो द राइट आंसर इज सी, ऑल थ्री आर राइट स्टेटमेंट. ठीक है. सो अब हम आ रहे हैं मॉडर्न टाइम पर. वी हैव टॉक्ड अबाउट द मिडाइवल एज वेल, समथिंग रिलेटेड टू मॉडर्न टाइम. क्वेश्चन नंबर 36, with reference to the various folk painting style of India, consider the following statement. पहला इज मधुबनी पेंटिंग जो बिहार का है. नेचुरल कलर का यूज़ किया जाता है इन दिस पेंटिंग एंड द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द फिंगर आर फिल्ड विथ पेंटिंग ऑफ फ्लावर्स एंड बर्ड्स. राइट. देन वी हैव कलमकारी पेंटिंग, आंध्र प्रदेश का, इंपॉर्टेंट है. इट इज़ द हैंड पेंटिंग डन ऑन द कॉटन क्लोथ्स इन विच द बैम्बू पेन एंड द नेचुरल कलर आर यूज्ड. ये कलमकारी पेंटिंग के बारे में 8th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी में भी है, एंड यू विल रीड व्हेन यू रीड 12th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी, इन बोथ द प्लेस यू विल फाइंड द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कलमकारी पेंटिंग. ठीक है. सो वहाँ पर देयर इज एन इंफॉर्मेशन. एंड देन वी हैव पट्टचित्र. दिस इज ऑफ ओडिशा. यस, पट्टचित्र ऑफ ओडिशा. इन दिस द माइथोलॉजिकल स्टोरी ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ एंड हिज सिबलिंग are made depicted on the cloth. Yes, ये तो famous ही है. So all the three is right यहाँ पर. So we have D as the right answer for question number 36. Right. अब आते हैं महाराष्ट्र की एक important painting है, that is वर्ली painting. Right. वर्ली tribe इस painting को बनाती है. So you have to tell कि which statement is correct. पहला, the daily life and the social events are depicted in the वर्ली पेंटिंग. yes, वर्ली पेंटिंग आप कभी भी देखेंगे तो महाराष्ट्र में देर आर मेनी रेलवे स्टेशन जहाँ पर रेलवे स्टेशन के वॉल पर वर्ली पेंटिंग को डिपिक्ट किया गया है. और वर्ली पेंटिंग को आप कभी भी देखेंगे तो इन द वर्ली पेंटिंग दे एक्चुअली डिपिक्ट द डेली लाइफ एंड सोशल इवेंट्स. सो दिस इज एब्सोल्युटली राइट अबाउट इट. राइट. देन यूजिंग द ज्योमेट्रिक शेप्स or like triangle, circular and squares and all this thing. Yes, this is right thing. ठीक है. Moving to the next statement, the main base of this painting is the red mud. Yes, आप कभी भी वर्ली पेंटिंग देखेंगे ना तो वर्ली पेंटिंग में एक ही रेड कलर का ही यूज किया गया है. पूरा का पूरा रेड कलर होता है और वो रेड कलर मेहंदी टाइप का दिखेगा. राइट. सो ये इट इज नथिंग बट द रेड मड. सो द मेन बेस ऑफ दिस पेंटिंग इज द रेड मड वॉल एंड दी आपका वाइट कलर होता है. मतलब बेसिकली वॉल इज रेड एंड द पेंटिंग इज वाइट इन कलर. ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो राइट.
एंड द ग्रेट इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द डिपिक्शन ऑफ द माइथोलॉजिकल डीटीज इन वर्ली। नहीं, माइथोलॉजिकल डीटीज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है, वर्ली ट्राइब्स वाले लोगों का है, तो ऑफकोर्स उन लोग माइथोलॉजिकल डीटीज को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, दे गिव इंपॉर्टेंस टू सोशल इवेंट। सो थर्ड वन इज रॉन्ग, 1 and 2 is right. So 37 के लिए we have question number 1, statement 1 and 2, that is option number A is right. Now moving to the next question, यहाँ पर है हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल, इसके मैच आपको बताना है, कौन सा मैच किससे रिलेट करता है। पहला है ब्लू पॉटरी। ब्लू पॉटरी कहाँ पर शो किया गया है, तो ये राजस्थान या जयपुर के वहाँ का फेमस फीचर है ब्लू पॉटरी, ठीक है। देन कलमकारी कहाँ पर है, तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कलमकारी आंध्र प्रदेश की इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। देन उसके बाद में माइनर वर्क की अगर बात करें तो ये कच्छ में, मिरर वर्क की अगर बात करें तो ये कच्छ का इंपॉर्टेंट फीचर है। एंड रुमाल एम्ब्रॉयडरी ये है चंबल का। तो इसमें जो बहुत फेमस है वह है कलमकारी, 1 is, सेकंड का 3, सेकंड के 3 से आप एलिमिनेट करके 2 ऑप्शन को हटा सकते हैं, और फिर जो सेकंड इंपॉर्टेंट या फेमस चीज़ है वो एक ब्लू पॉटरी एंड मिरर वर्क, इसके बेसिस पर भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो द राइट आंसर इज ए, ठीक है। सो द राइट आंसर इज ए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 39, with reference to the regional festival of India and their cultural significance, consider the following pair. कौन सा पेयर सही है? पहला लाई हरोबा, ठीक है, सॉरी दिस वन हराओबा, द रिचुअल फेस्टिवल ऑफ द मेथी कम्युनिटी इन मणिपुर, यस। Nuakhai is the main agriculture festival of Odisha in which the new crop is welcomed. Then Hornbill Festival नागालैंड का है, फेमस है हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का, ये एब्सोल्युटली राइट है। ये वाला भी मणिपुर का राइट है। नौखाई, यहाँ से आप नाम से भी थोड़ा बहुत डिराइव कर सकते हैं, ओडिशा में ओडिया टर्म में नौखाई इज रिलेटेड टू अ न्यू क्रॉप जिसका कल्टिवेशन हो रहा है, राइट। सो दिस वन इज राइट। एंड Charkut is a spring festival of Mizoram celebrated for the completion of the Jhum cultivation. Jhum cultivation आपको पढ़ना होगा, Jhum cultivation is important. All the 4 is वैसे right, so the right answer is D, right. So the right answer is D for the question number 39. Now moving to the next question, that is question number 40. Assertion or reasoning है, the assertion is Kumbh Mela has been included in the UNESCO's Intangible Cultural Heritage of Humanity list. Yes, अभी 2-3 साल पहले ही इसे शायद 2023 में ऐड किया गया था। Then Kumbh Mela is the world's largest peaceful religious gathering which presents the unique confluence of the astronomy, astrology and Indian spiritual traditions. Yes, so both the statement is right. And because of this unique feature, it was added in UNESCO's intangible list. So R is the explanation of A. Hence the right answer is A. For the question number 40, the right answer is A. ठीक है। Now अब हम 41 से we are into modern history में हम आ रहे हैं। I mean we will be talking about history and not art and culture. तो art and culture तक का यहाँ का क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ऑफ ब्रिटिश इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय द चार्टर एक्ट 1833. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू 1833 का चार्टर एक्ट. द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल was made the governor general of India, yes, and was granted the legislative power in council. Yes, this is absolutely right. Then the Indian Council Act of 1861 gave the statutory recognition to the portfolio या departmental system. 1861 ने portfolio recognition departmental या portfolio system for the first time which simplified the division of the work in the Viceroy's Council. नहीं, 1853 है वैसे जिसने portfolio system को introduce किया था, ठीक है। And then we have this one,
अच्छा ये स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन है, सो स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन 61 से, लेकिन फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस 1853 से है. सो द क्वेश्चन स्टेटमेंट इज टॉकिंग अबाउट स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन, तो ये बात एकदम सही है. एंड देन डायरकी वाज इम्प्लीमेंटेड एट द सेंटर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. नहीं, डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द सेंटर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. सेंटर पे तो 1919 ने स्टेट में लाया था, तो थर्ड वन इज रॉन्ग, 1 and 2 इज राइट. सो द राइट स्टेटमेंट इज ए, आंसर इज ए. ठीक है, सो वी आर डन विथ क्वेश्चन नंबर 41. नाउ क्वेश्चन नंबर 42, with reference to the socio-religious reform movement of the 19th century, consider the following statement. Deoband movement, revitalist movement which completely opposed the English education and Western culture, right? Then उसके बाद में सत्य शोधक समाज was founded by Jyotiba Phule and was the main objective was to challenge the Brahmanical supremacy and the rituals of the Dalit and the upliftment of Dalit. Yes, second is right. Dharma Sabha was founded by Radhakant Deb, and the organization strongly supported the abolition of the practice of sati. Yes, so second statement is right, third statement is right, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि देवबंद वॉज द रिवाइटलिस्ट मूवमेंट. यस, लेकिन विच कंप्लीटली अपोज्ड इंग्लिश लैंग्वेज एंड वेस्टर्न कल्चर, तो ये गलत है. कंप्लीटली इंग्लिश लैंग्वेज को इसने अपोज नहीं किया था, तो 1 इज रॉन्ग, 2 and 3 इज राइट. सो वी कैन से ओनली 2 is right. ठीक है, सो द ओनली 2, इसका मतलब B is the right answer for question number 42. Question number 43 में, with reference to the development of the judicial organization and the public service in India, consider the following statement. First, Lord Cornwallis separated the revenue administration from the judicial administration under the principle of separation of power. Yes, absolutely right. Next, the Charter of 1853 introduced the system of the open competition for the civil service, which was opposed the open door for which also opened the door for Indians. Yes, the Atchison Commission recommended the Service Commission to be divided into the category that is provincial imperial commission and the imperial, provincial and the subordinate service. Yes, 1924 की ये कमीशन है जिसने ये recommend किया था. So all the 3 statement is right. So the statement option number D is the right answer. Then we have assertion and reason. The reform movement of the 19th century prepared the intellectual base for the development of the national conscience. Yes, reform movement था, इसने एक base बनाया for national conscience के लिए. Absolutely right. The reason is this movement attacked the superstition, promoted rationalism, advocated the reform and internal evils of the society. Yes, ये रीज़न है, इसीलिए हम बोलते हैं कि इन लोग इंटेलेक्चुअल बेस को आधार बना रहे थे, बेस बना रहे थे फॉर द नेशनल कॉन्साइंस. यस, सो बोथ आर राइट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. देन 45, क्वेश्चन नंबर 45, मूवमेंट्स और उससे रिलेटेड फाउंडर का क्या व्यू पॉइंट है वो सारा चीज़. फर्स्ट, अलीगढ़ मूवमेंट by Sir Syed Ahmad Khan. Absolutely right. So this is by Sir Syed Ahmad Khan. Western education and modern interpretation of Quran. Yes, ये याद रखेगा, अलीगढ़ मूवमेंट सर सैयद अहमद खान की तरफ से है और इसका फोकस वेस्टर्न एजुकेशन के ऊपर एंड मॉडर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान के ऊपर है. तो 1 का 1 हो गया. अहमदिया मूवमेंट मिर्ज़ा गुलाम अहमद का था. यस, ये भी नाम सही है. लिबरल फॉर्म ऑफ इस्लाम एंड यूनिवर्सल रिलीजियस हार्मनी. यस, इसलिए आपको पता होगा मुस्लिम्स लोग डू नॉट कंसीडर अहमदिया मुस्लिम्स एज द रियल प्योर मुस्लिम्स, राइट, क्योंकि उन लोग रिफॉर्म की बात कर रहे थे, लिबरल फॉर्म ऑफ इस्लाम की बात करते थे, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू दी अदर मुस्लिम्स. सो सेकेंड इज ऑल्सो, सेकेंड का 2 ही हो गया. फराइजी मूवमेंट हाजी सरायतुल्ला टू सेव द मुस्लिम पीजेंट्स फ्रॉम द एक्सप्लॉटेशन. यस,
कर्नाटक केरला के वहाँ का ये मूवमेंट है, एंड दिस इज ऑल्सो राइट. वहाबी मूवमेंट सैयद अहमद बरेलवी aim to transform India into Dar-ul Islam. Yes, so all the three सामने सामने ही right है, तो A is the right answer. 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 and 4 का 4 is the right answer. ठीक है. अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 46. क्वेश्चन नंबर 46 में विथ रेफरेंस टू द निर्गुण एंड सगुण भक्ति सेक्ट ऑफ द मिडाइवल इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. आपको स्टेटमेंट पढ़ के बताना है कौन सा स्टेटमेंट राइट है. नाउ फॉलोवर ऑफ द सगुण सेक्ट वर्शिप्ड द फॉर्मलेस एस्पेक्ट ऑफ द गॉड. इन लोग एंड डिड नॉट एक्सेप्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकारनेशन. गलत, ये तो ये है निर्गुण वाले लोगों का फीचर है, नॉट सगुण, तो दिस इज रॉन्ग. नेक्स्ट, निर्गुण सेक्ट इसी में से आते हैं कबीर एंड नानक, गुरु नानक. यस एग्जैक्टली. स्ट्रांगली अपोज द बॉन्ड ऑफ द कास्ट सिस्टम एंड आइडियल वर्शिप. यस, निर्गुण वाले लोग जो है इन्हीं लोग बात करते हैं कि कोई फॉर्म नहीं है भगवान का, आइडियल वर्शिप को इन लोग सपोर्ट नहीं करते हैं. सो दिस वन इज राइट. थर्ड, Tulsidas and Chaitanya Mahaprabhu were prominent saints of the Sagun tradition who popularized the devotion of Ram and Krishna respectively. Yes, so 2 and 3 is right, 1 is wrong, right answer is B. So we are done with question number 46. Question number 46 में the right answer is B. फिर next question, this is related to consider the following pair in the context of the Sufi terminology. 1. Vilayat, the spiritual domain or jurisdiction of Sufi saint. Then Barakat, the spiritual power or blessings of the Sufi saint. जिसको हम बरकत बोलते हैं, बरकत होगा, है ना. Now this is Malfuzat, that is the philosophical book written by Sufi saint, and Kankha, the place where the Sufi saint reside and give sermon, right. So we are, the right one is Malfuzat. Malfuzat छोड़ दीजिए, 1, 2, 3 is right, 1, 2 and 4 is right. So the right is 3, C, the option number C, that is only 3 pairs are right here in the question number 47. Now coming to the 14th question number 48, with reference to the Bhakti movement of South India, consider the following statement. Pehla, Alwar saints were devotees of Vishnu, yes, while Nayanar saints were the worshipper of Lord Shiv, right. Pehla statement is right. Second, these saints challenged the growing influence of Buddhism and Jainism through their devotional composition, yes. Then the composition of the Alwar saints were compiled in Nalaira Divya Prabandham, which is known as the Tamil Veda. Yes, Tamil Veda में Alwar saints लोगों के compositions को mention किया गया है, right. The participation of women was completely prohibited. देखिए extremeness भी show करा है, completely prohibited in this movement. Hence this statement is wrong. So the right statement is 1, 2 and 3, right. 1, 2, 3, है ना. The participation of women was completely prohibited. नहीं, completely prohibited नहीं होता है. So the statement is this wrong. ठीक. Now moving to the next question, this is again related to the Srishti Silsila. इसमें देखिए, the statement is the Srishti Silsila of the Sufism refrained from accepting the official patronage. अभी ऊपर हमने पढ़ा था, उन लोग डांस और म्यूजिक ये सब को सपोर्ट करते हैं, लेकिन they do not support the official, they do not favor the official position and all those things. So this statement is right. Next, Delhi, this one, Srishti saint believed that the proximity to politics and power creates the obstacle in spiritual purity and devotion to God, right. तो इनको लगता था कि अगर पावर पोजीशन हाथ में आएगा तो भैया
इससे प्यूरिटी नहीं होगा एंड स्पिरिचुअल डिवोशन टू गॉड नहीं हो पाएगा. सो दिस इज द बोथ आर द राइट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. So we're done with question number 49 as well. Now, coming to question number 50, consider the following specialties with reference to the Varkari sect of Maharashtra. This sect is based on the worship of Lord Vitthal, yes, incarnation of Vishnu, whose main temple is located in Pandharpur. One is right. क्या हमें बताना है? True बताना है. This sect is based on the worship of Lord Vitthal. वरकारी, यस, ठीक है. लॉर्ड विष्णु के मतलब वरकारी सेक्ट्स वाले लोग विट्ठल की पूजा करते हैं. भगवान विट्ठल इज द इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, यस, एंड इट इज लोकेटेड इन पंढरपुर, राइट. नेक्स्ट, ज्ञानेश्वर, ध्यानेश्वर, नामदेव, ध्यानेश्वर हो गए, नामदेव हो गए, तुकाराम हो गए, वो द प्रोमिनेंट सेंट ऑफ दिस सेक्ट who composed the bhakti literature, yes, in Marathi language, right. Varkari sect supported the Varna system and kept the path of devotion open only for the upper caste. Again extremeness आ गया, open only for the open caste, so this is wrong, right. पहली बात तो वर्ना सिस्टम को लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, दूसरी बात होगा ओनली फॉर अपर कास्ट वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है. सो दिस वन इज रॉन्ग. सो 1 and 2 इज राइट, बी इज द राइट आंसर, ठीक है. नाउ moving to the next question, that is 51, question number 51. This is with reference to the political situation in India in the late 18th century, consider the following statement. Pehla, the successor state such as Awadh and Hyderabad had emerged after the decline of the Mughal Empire, never challenged the nominal sovereignty of the Mughal Empire, right. ये एकदम ही सही है. सक्सेसर स्टेट्स ऐसे ही स्टेट्स को कहते हैं जो मुगल एम्पायर के गिरने के बाद जिनका जन्म हुआ है, मतलब जो एग्जिस्टेंस में आते हैं. सो 1 इज राइट. सेकेंड, द मेन रीजन फॉर द डिफीट ऑफ द मराठा कॉन्फिडरेसी was their internal difference and the lack of scientific warfare skills, right. The third battle of Panipat of 1761 decided who would rule over India. Did it decide who is going to rule over India? The answer is no. So the right answer is 1 and 2. So the right option is A. Next, with reference to the arrival of the European power in India, consider the following. Portuguese, they established the monopoly over the maritime trade in India through the cartridge system, yes. Dutch के बारे में, they mainly focused on the spice industry spice island, that is Indonesia, and used India for the commercial center, yes. French, their main reason for their failure in India, was the company being under the complete government control, yes, right. So all the 3 is right, so the right answer is C. यहाँ पर all the 3 is right, right answer C है. 53 पे आते हैं. With reference to the consequence of the Treaty of Allahabad 1965, consider the following statement. पहला, East India Company obtained the Diwani right of Bengal, Bihar and Odisha, yes, Treaty of Allahabad के थ्रू ही मिला था, right है. Next, the Mughal Emperor Shah Alam II was kept in Allahabad under the protection of the company, yes. Next, the Nawab of Awadh was appointed as the Naib Nizam of Bengal. नहीं, ये तो गलत है. 1 and 2 is right, right answer is A. Now moving to question number 54. With reference to subsidiary land system in India, British India, consider the following statement. The main objective of this system was to maintain the large British army at the expense of the Indian state, yes. Subsidiary lands exam point of view से important है. First statement is right. It is mandatory for the state accepting the alliance to keep the British resident in this court, yes. हैदराबाद पहला स्टेट है जिसने इसको एक्सेप्ट किया था, राइट. ऑल द 3 इज राइट, सो द राइट आंसर इज D 1 2 3. Next, the following question consists of 2 statement, assertion and reason. क्या right है वो बताना है. Assertion, the regulating act of 1773 was the first
serious attempt by the British Parliament to control the affairs of the East India Company? Yes. Reasoning, the employees of the company were involved in the heavy corruption and the company was on the verge of the bankruptcy due to financial crisis. Right. Both are right and R is the explanation of A. So the right answer is A. Okay. Then we have question number 56. With reference to the administrative reform of Warren Hastings, consider the following statement. पहला, he ended the dual government. Dual government को Warren Hastings ने end किया. हाँ जी, एकदम ही सही बात है. Next, Hastings ने establish किया है the civil, Diwani and the criminal court in India. Yes. फिर उसके बाद में he started the Izaredari, that is farming system, right? Redari system, farming system in which the right to collect the land revenue was given to the highest bidder. Yes. तो ये तीनों ही right statement है. So the right answer is D, 1, 2 and 3. Board of Control ये क्या करता है? Control the political power, political matter related to military, civil and the revenue. 1 का 2 हो गया. 2 का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या है? मैनेजमेंट ऑफ द कंपनीज कमर्शियल अफेयर. सो द राइट आंसर इज ए. राइट. सो द राइट आंसर हियर इज ए. फिर मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज 58th क्वेश्चन. नाउ व्हाट इज 58th क्वेश्चन? With reference to the permanent settlement system, consider the implemented by Lord Cornwallis. Consider the following statement. पहला, आपको क्या बताना है? You have to tell me the incorrect statement. पहला, in this the zamindar were accepted as the owner of the land and the rate of revenue was fixed permanently. Yes. Second, under the sunset clause, if the revenue was not deposited by the fixed date, the zamindari was auctioned. Yes. Third, this system was mainly implemented in the Madras and the Bombay province. नहीं, ये system तो in fact बंगाल वो सब जगह पे introduce किया गया था. So the third one is wrong. 1 and 2, A is the right answer. ठीक है. Next is related to Mysore and British conflict. Consider the following statement. The Second Anglo-Mysore War ended with the Treaty of Mangalore, right? After the Third Anglo-Mysore War, Tipu Sultan had to surrender half of his kingdom to the British. Yes. The influence of the idea of the French Revolution, influenced by the idea of French Revolution, Tipu Sultan planted the tree of liberty in Srirangapatnam, right? 1, 2 and 3, all the 3 are right. So next question 60, which of the following statement regarding the Charter Act of 1813 is correct? So it is, it provided spending 1 lakh per year for the spread of education. B is the right answer. Question number 61 में, with reference to the British era civil service, consider the following statement. Lord Cornwallis को ही हम बोलते हैं father of Indian civil service. Yes. Cornwallis emphasized the Europeanization of the civil service and excluded the Indians from the high position. Yes. Lord Wellesley established the Fort William College in Calcutta for the training of civil servants. Right. So all the 3 is right. So hence the right answer is D. Right. So the right answer is D. 61 का D. 62 में assertion and reason. Lord Dalhousie ने doctrine of lapse लाया था, prepared for the major ground for the revolt of 1857. Yes. Next, Dalhousie annexed the states like Satara, Nagpur, Jhansi through his policy, which created the sense of insecurity among the Indians. Right. So answer A है, because both are right and R is the correct explanation of A. Then, so this was question number 62. Moving to question number 63. Question number 63 बोलता है, with reference to the ideological perspective of Raja Ram Mohan Roy and Brahmo Samaj, consider the following statement. Ram Mohan Roy supported monotheism, yes, and criticized the polytheism through the book title Tuhfat-ul
Muvahidin, right? Next, Brahmo Samaj accepted, so first one is right. Next, Brahmo Samaj accepted the infallibility of the Vedas. नहीं, वो आर्य समाज ने एक्सेप्ट किया है the infallibility of Veda. So देखिए, अगर आपको पहला नहीं भी पता है, second statement is very famous. Arya Samaj is famous for accepting the infallibility of Vedas, ठीक है, and supported the ideal worship. सो सेकेंड इज, यहाँ हमें क्या बताना है, करेक्ट बताना है, तो सेकेंड इज रॉन्ग. सेकेंड रॉन्ग के हिसाब से द राइट आंसर इज सी, 1 and 3 ओनली. सेकेंड को एलिमिनेट कर दीजिए, सो यू विल गेट द सी. नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू रिवाइटलिस्ट, विथ रेफरेंस टू 64 का रिवाइवलिस्ट and reformist movement of the 19th century, consider the following statement. Arya Samaj revivalist है, gave the slogan go back to Vedas and started a Suddhi movement. Yes. Pratna Samaj reformist है, focused on the abolition of the caste system and women's education in Maharashtra. हाँ जी. यंग बंगाली की बात करेंगे, ये रिवाइवलिस्ट था. यंग बंगाल मूवमेंट बाय हेनरी डोरोजियन के तरफ से था. वॉज टू इस्टेब्लिश द एंशंट इंडियन ट्रेडिशन एज इक्विवेलेंट टू वेस्ट. नहीं, एंशंट इंडियन ट्रेडिशन के ऊपर फोकस नहीं था, ये रिफॉर्मिस्ट टाइप का या रिवाइवलिस्ट टाइप का है. तो ये वाला वैसे ये रिफॉर्मिस्ट है, राइट, रिफॉर्मिस्ट है, तो ये वाला एक गलत हो जाता है. अकाली मूवमेंट रिफॉर्मिस्ट है, टू फ्री गुरुद्वारास फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द करप्ट महंत, राइट. सो थर्ड वन इज रॉन्ग, क्योंकि देखिए ये रिवाइवल नहीं कर रहा है. रिवाइवल मतलब पुराने चीज को रहा, रिफॉर्मिस्ट मतलब कुछ नया रिफॉर्म करना. ये नया रिफॉर्म की बात करता था यंग बंगाल मूवमेंट. तो थर्ड वन इज रॉन्ग. 1 2 3 ओनली 3, दैट इज सी इज द राइट आंसर. नाउ 65, क्वेश्चन नंबर 65, विथ रेफरेंस With reference to the social movement of South India, consider the following statement. Sri Narayan Dham Paripalam SNDP movement was led by Narayan Guru, who gave the message of one caste, one religion, one God. Right. Self-respect movement E.V. Ramaswamy Naikar का है, against the Brahmanical supremacy and the right of the non-Brahmins. Right. वकालिंग मूवमेंट जो है या वकालिंग संघ की बात करें तो ये एंटी ब्राह्मणिकल मूवमेंट है इन मैसूर एंड विच डिमांडेड द रिजर्वेशन इन द गवर्नमेंट सर्विस. राइट, ऑल द 3 इज राइट. सो 65 का वी हैव डी 1 2 then 3. 66, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. असर्शन रीजन है. ईश्वर चंद विद्यासागर प्रोवाइडेड द रैशनल एंड स्पिरिचुअल बेसिस टू द विडो रीमैरिज मूवमेंट. यस, 8th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में ये पॉइंट है. He tried to provide through the ancient Hindu text, that is Parashara Samiti, especially the Parashara Samiti, that widow remarriage is not prohibited in this scripture. Yes, so both are right and right explanation भी है, तो right answer is A. ठीक है, तो we are done with 66. 67, with reference to the contribution of the Theosophical Society and any basin, consider the following statement. पहला, Theosophical Society was originally founded in Madras, अद्यार. नहीं, थियोसोफियन सोसाइटी ओरिजिनली यूएसए में फाउंड की गई थी 1875 में. बाद में 1882 में उसके हेडक्वार्टर को शिफ्ट करके मद्रास अद्यार लाया गया. सो पहला स्टेटमेंट इज रॉन्ग. एलिमिनेशन मैटर से आपको पता चल जाएगा. ऑप्शन नंबर बी 2 and 3 इज राइट. देन क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन 68. क्वेश्चन 68 में यहाँ पर बताना है रिवोल्ट ऑफ 1857 से रिलेटेड. पहला, द रिलीजियस, हमें बताना है व्हाट आर द कॉज. पहला, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट ऑफ 1850, इज इट द कॉज? यस. Through this, the changes were made in the Hindu custom so that the son who convert their religion could inhabit his father's property. Religious Disability Act of 1850. हाँ जी, ये एक responsible है. Next, General Service Enlistment Act of 1856. Now, under this, it was made mandatory for all the new recruits to serve across the seas, which was considered against the religion
in the Hindu. Yes, exactly. यहाँ पर रिवर उस समय वाटर को क्रॉस करना, रिवर को क्रॉस करना वॉज कंसिडर टू अ टैबू और यहाँ पर जबरदस्ती करवाया जा रहा था. तो दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857. Post Office Act which abolished the free postage facility given to the soldiers. Yes, so all the three are responsible for the revolt of 1857. ठीक है. Now all three, so right answer is D. Now question 69, रिवोल्ट ऑफ 1857 किसने लीड किया और जगह और किसने उसको सप्रेस किया. झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, सर ह्यूज रोज ने सप्रेस किया. यस. कानपुर में नाना साहब लीड कर रहे थे, कॉलिन चैम्बल ने सप्रेस किया. राइट. दिल्ली में जनरल भक्त खान उसे लीड कर रहे थे और जॉन निकोलसन ने सप्रेस किया. राइट. फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला उसको लीड कर रहे थे. हाँ. हेनरी लॉरेंस ने सप्रेस किया. नहीं, कॉलिन चैम्बल ने उसको सप्रेस किया. तो 4 इज रॉन्ग. तो 1, 2 एंड 3 इज राइट. सो द राइट आंसर इज सी, दैट इज 3 पेयर. ठीक है. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 70. With reference to the administrative changes made through the Government of India Act 1858, consider the following statement. The rule of East India Company was ended and the administration was placed directly under the British Crown. Yes, 1858 के act ने ये किया था. तो this is right. The Board of Control and the Court of Directors were abolished and the post of the Secretary of the State for India was created. Yes. 15 members Indian Council was formed to assist the Secretary of State, which consist only of Indians. No, इसमें 15 का 15 पूरा Indians है, वैसा नहीं था. Indians as well as Britishers दोनों थे. Hence the third statement is wrong. So the 70 का right answer है A, 1 and 2 only. Then 71, question number 71, assertion है. After the revolt of 1857, the British government adopted the policy of divide and rule in the reorganization of the army. Yes. On the recommendation of the Peel Commission, the ratio of the European soldier in the to the Indian soldier in the army was increased and the regiment were formed on the basis of caste and the religion. Yes. Both are right and R is the explanation of A. That is also true. Question number 72. Question number 72 में, with reference to the far-reaching consequence of the Queen's Proclamation of 1858, consider the following statement. The British government recognized the right of the Indian rulers to the adoption and gave the assurance not to annex the state in future. Right. क्वीन के प्रोक्लेमेशन में कहा गया था कि हम फ्यूचर में एनेक्स और प्रॉपर्टी और कोई भी स्टेट्स को नहीं करेंगे. एग्जैक्टली. सेकेंड, the government declared that it would respect the ancient right and practice and religious belief of Indians and would not actively interfere in the social reform. Yes. Third, it promised to establish the complete equity between the Indians and the British in the high position of the administrative service, which was implemented immediately. Galat. So third one is wrong. 1 and 2 is right. So the right answer is A. Now we have 73rd question. Question number 73rd. With reference to the working method of the moderate phase of the Indian National Congress के context में 3 statement है. पहला, the moderate leader expressed their faith in the constitutional agitation, constitution के through agitation करने का. Yes. And adopted the policy of prayer, petition and protest. Yes. Second, they demanded to increase the participation of the Indians in the administration instead of completely overthrowing the British rule. Yes. Third, Dadabhai Naoroji exposed the exploitative nature of British rule through drain of wealth theory. Yes, all the 3 is right. So the right answer for the question number 73 is D. ठीक है. Now question number 74. Now question number 74, with reference to the achievements of the moderates and the British response, consider the following statement. पहला, as a result of the continuous effort by the moderates, the Indian Council Act of 1892 was passed. Yes. Which expanded the central and the provincial legislative council. Yes. Next, under the policy of divide and rule, the British government completely Indianized the service to please the moderates. No, ऐसा कुछ भी नहीं किया. Third, seeing the growing popularity of the Congress, Lord Dufferin
ridiculed it by calling it the organization representing the microscopic minorities. Yes, this statement is very famous of Lord Dufferin. 1 and 3 is right, 2 is wrong. So the right answer is C. 74 ka it is C. Now 75, with reference to the reason of the rise of extremist ideology, consider the following statement. The Indian University Act 1904 and the partition of Bengal 1905 intensified the anti-British resentment among the youths, right? Second, the Japanese victory in the Russo-Japanese War 1905 broke the myth that the European power is invincible, right? Third, Tilak, Lala Lajpat Rai and Bipin Chandra Pal described the armed revolution as the only way instead of passive resistance. Galat. In fact, these three they supported the passive resistance, not armed rebellion. थर्ड इज रॉन्ग. और अगर ये नहीं भी पता होगा तो ओनली शब्द एक्सट्रीमनेस आ गया, तो यहाँ से भी आप थोड़ा सा हिंट मार सकते हैं कि दिस इज रॉन्ग. 1 and 2 इज राइट. सो ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर राइट. राइट. Moving to the next one, that is, this one is related to Swadeshi movement. Pehla, the boycott of the foreign goods and the abandonment of the government school courts and the jobs were the main part of this movement. Yes. Next, Swadesh Bandhan Samiti, founded by Ashwini Kumar Dutt, played an important role in mobilizing the public opinion. Yes. Rabindranath Tagore wrote a song, Amar Sonar Bangla, during this time and used the Raksha Bandhan as the symbol of communal harmony. Yes. 76 में all the three are right statement and hence the right answer is D. 1, 2, 3. Then moving to the next, that is 74. Assertion है the Surat split of 1907 provided to be the major political loss of Indian National Congress. Yes. क्यों? Because moderate wanted to limit the Swadeshi movement only to Bengal, while the extremists wanted to spread it throughout the country, and were demanding for the clear explanation of the Swaraj. Yes, both are right and R is the explanation. इसी कारणवश 1907 में this division happened. ठीक है? So R is the explanation. So the right answer is A for the question number 77. Right? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे. आपके सामने एक ऑर्गेनाइजेशन है और दूसरे तरफ रिलेटेड पर्सन है, राइट या रॉन्ग. अभिनव भारत से वीडी सावरकर, राइट. अनुशीलन समिति से बीरेंद्र कुमार घोष एंड जतेंद्र नाथ बैनर्जी थे. यस. गद्दार पार्टी से लाला हरदयाल एंड सोहम सिंह बखना, राइट. मुजफ्फरपुर बॉम्ब जो कॉन्स्पिरेसी या केस है उससे रिलेटेड प्रफुल्ल चक्की एंड खुदीराम बोस, राइट. ऑल द 4 आर राइट. सारे के सारे राइट है. देन विथ रेफरेंस टू हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ सही है. फर्स्ट, थ्रू दिस एग्रीमेंट the reunification between the moderates and the extremist fraction of the Congress took place. Yes, लखनऊ पैक्ट में ही कांग्रेस के moderates और extremist इकट्ठा साथ में आ गए थे. Second, the political agreement was reached between the Congress and the Muslim League, in which the Congress accepted the demand of the separate electorate for Muslim. Yes, यही 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी साथ आया क्योंकि कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया था सेपरेट इलेक्टोरेट जो 1909 में मिला था, राइट, मुस्लिम्स लोगों को. And third, Annie Besant and Bal Gangadhar Tilak played an important role as a mediator in concluding this agreement. Yes. So all the 3 is right in the question number 73. So the right answer is D. Okay. Moving to the next, this one is related to non-cooperation movement. Question number 80. In the Nagpur session of 1920, the Congress changed its goal from the self-government through constitutional means to Swaraj through peaceful and legitimate means. Yes. Next, during this movement, Tilak Swaraj Fund, non-cooperation movement के time पर Tilak Swaraj Fund was established as the goal was to collect more than 1 crore rupees. Yes. Next,
Gandhi ji was declared that if the program of non-cooperation was fully implemented, Swaraj would be achieved within 1 year. Yes, Gandhi ji had declared this thing. Now, after the Chauri Chaura incident, when Gandhi ji withdrew the movement, the Congress Working Committee gave its official consent to it through the Bardoli Resolution. Yes, Bardoli Resolution famous है, इसी के through withdrawal of non-cooperation movement किया गया. So 1, 2, 3, 4, all the 4 are right. So the right answer is D. Now question number 81. Question number 81 में one side we have region, the other side we have leaders. आपको बताना है रीजन या मूवमेंट और उससे रिलेटेड जो लीडर्स का नाम है सही है कौन सा किससे रिलेटेड है. द वेरी फर्स्ट इज रिलेटेड टू दर्साना मूवमेंट, फेमस है फॉर सरोजनी नायडू. ठीक है, सरोजनी नायडू है, इमाम साहेब एंड मणिलाल. राइट. रेस्ट सर्ट मूवमेंट वेरी फेमस है, रेड सर्ट मूवमेंट ये है आपके खान अब्दुल गफ्फर खान से रिलेटेड, फ्रंटियर गांधी. राइट. देन जिसको हम खुदाई खिदमतगर भी बोलते हैं इस मूवमेंट को. देन वैकोम मूवमेंट, दिस वन वैकोम मूवमेंट से रिलेट होते हैं के केलप्पन एंड पी कृष्णा पल्ली एंड रानी गैडुलिन लुई. ठीक है, एंड शी लेड द रेबिलियन 1857 का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाला वो सारा चीज़ मूवमेंट कहाँ पर आपकी मणिपुर एंड नागालैंड ये सब इलाके में. सो ऑल द 4 सामने सामने ही है 1, 2, 3, 4. सो द राइट आंसर इज ए. 81 का इट इज ए. मूविंग टू द नेक्स्ट दैट इज 82. 82 में दिस वन इज रिलेटेड टू गांधी आयरविन पैक्ट. हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट राइट है. द थिंग इज government accepted पहला government accepted the right to make the salt for the consumption in the coastal village. गलत, ऐसा गवर्नमेंट ने कुछ एक्सेप्ट नहीं किया था. बट सॉरी, गवर्नमेंट एक्सेप्टेड, गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया था, है ना. गवर्नमेंट एक्सेप्टेड दिस थिंग. राइट. नेक्स्ट, government agreed to immediately release all those political prisoners who were not accused of violence. Yes, Gandhi ji agreed on the behalf of the Congress to participate in the second roundtable conference and suspend the civil disobedience movement. Yes, British government accepted the demand to commute the death sentence of Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru to life imprisonment. Yes, they agreed to, nahi, they did not agree. British government did not accept this thing. So दिस स्टेटमेंट, फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग, हमें इनकरेक्ट बताना है. तो द राइट आंसर इज सी. ठीक है. नाउ क्वेश्चन 81 विथ रेफरेंस टू द नेचर एंड द स्प्रेड ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 आपको स्टेटमेंट बताना है कौन सा सही है. पहला, द वर्धा रेजोल्यूशन जुलाई 1942 का, द कांग्रेस मेड अ फॉर्मल डिमांड टू द ब्रिटिश टू लीव इंडिया. यस, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड द लीडरलेस मूवमेंट बिकॉज ऑल द मेजर लीडर्स वर अरेस्टेड एंड under the Operation Zero Hour. Yes, during the movement, the parallel government was established in Balia by Chittur Pandey. Then इसके अलावा उड़ीसा के तमलुक एंड महाराष्ट्र के सतारा में भी पैरल गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था. Yes, the Communist Party of India and Muslim League fully supported the movement. गलत, they did not support the movement. So 1, 2 and 3. So A is the right answer. Then 84, that is assertion and reasoning. पहला, the Pune Pact of 1932 is based on the principle of the reserved seat for the depressed class instead of separate electorate. Right. Next, पूना पैक्ट में यही था ना कि भाई सीट रिजर्व करेंगे लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं रहेगा. Gandhi ji believed that separate electorate system for the depressed class would create the prominent division within the Hindu society. Yes. सो दिस इज द रीज़न पूना पैक्ट में से सेपरेट इलेक्टोरेट को हटाया भी गया था, मतलब नहीं मेंशन किया गया था टू काउंटर वो रैमसे मैकडोनाल्ड अवार्ड था उसको काउंटर करने के लिए. सो बोथ आर राइट एंड आर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. 85 का क्वेश्चन है, ये है इसका ऑर्डर बताना है. क्रिप्स मिशन 1942 का है, राजा राज गोपालाचारी फॉर्मूला 1944, वेवल प्लेन या शिमला कॉन्फ्रेंस 1945, कैबिनेट 1946. तो 1, 2, 3, 4. ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 85. ठीक है.
नाउ नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 86. क्वेश्चन 86 में है, दिस वन इज रिलेटेड टू कैबिनेट मिशन प्लान. पहला, इट प्रपोज द 3-tier फेडरेशन फॉर इंडिया इन विच द प्रोविंस वर डिवाइडेड इन 3 ग्रुप A, B and C. राइट. नेक्स्ट, इट क्लियरली एक्सेप्टेड द मुस्लिम लीग्स डिमांड फॉर द फुल्ली सॉवरेन पाकिस्तान. नहीं, याद रखिएगा कैबिनेट मिशन प्लान में ऐसा कुछ एक्सेप्ट नहीं किया गया था. तो सेकंड इज रॉन्ग. तो सेकंड रॉन्ग है. तो एलिमिनेशन मेथड से भी आप डायरेक्टली थर्ड ना भी पढ़े तो आप पहुंच सकते हैं. सी इज द राइट आंसर. 1 and 3 इज द राइट. देन 87, क्वेश्चन नंबर 86 हो गया. क्वेश्चन नंबर 87 आपको बताना है कौन सा राइट है. वाइसरॉय और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज. लॉर्ड मायो, कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेंसस इन इंडिया एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल सर्वे. राइट. लॉर्ड लीटन के बारे में कमेंसमेंट ऑफ द स्टैट्यूटरी सर्विस कमीशन एंड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट. राइट. लॉर्ड रिपन, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट इसके टाइम पे ही है. रेजोल्यूशन फॉर द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसीलिए लॉर्ड रिपन को हम फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं. लॉर्ड डफरिन है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड थर्ड एंग्लो बर्मिस वॉर इन्हीं के टाइम पे हुआ है. राइट. 1, 2, 3, 4 ऑल द 4 आर राइट. सो द राइट आंसर इज डी. क्वेश्चन 88 पे आएंगे. विथ रेफरेंस टू द मेजर ट्राइबल मूवमेंट ऑफ 19th century कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. राइट. Santhal rebellion conducted under the leadership of Sidhu and Kanu, very famous Sidhu and Kanu, against the Dikkus यानी outsider and जमींदार. राइट. मुंडा रेबिलियन जो है इसी को उलगुलन रेबिलियन बोला जाता है, उड़ीसा का है, एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ बिसरा मुंडा एंड लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुंडा राज. यस, not led to, aimed to establishment of मुंडा राज. देन रंपा रेबिलियन 1922-24 का है, fought in the tribal area of Madras Presidency under the leadership of Alluri Sitaram Raju using the guerrilla warfare system. Right. All the 3 are right, so the right answer is D. Right. So till question number 88 we are done. Up question 89. The peasant movement and their objectives. Like for example, पहला पबना मूवमेंट जो है, दिस वाज अगेंस्ट द एक्सेसिव इंक्रीज इन द रेंट एंड द एविक्शन ऑफ बाय जमींदार्स. यस. डेक्कन मूवमेंट जो महाराष्ट्र ये सब इलाके में होता है, फार्मर का रिसेंटमेंट था अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मरवारी एंड द गुजराती मनी लैंडर्स. यस. एंड देन कम्स द एका मूवमेंट जो ऑक्योर्ड इन हरदोई, बरेच एंड सीतापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश against the high rent and exploitation by contractors. Right. So all the 3 pairs are right, so the right answer is C for question number 89. Then comes question number 90. Again this one is related to cabinet mission plan. Group A include the Hindu majority province. हाँ जी, correct है. Group B ये include करता है Muslim majority province को. हाँ जी, correct है. Then group C included the Muslim majority area of the northeast Bengal and Assam. हाँ जी. Group D, right of the मतलब question or point D, the right of the province to opt out these groups were given only after the initial constitution making. नहीं, constitution making तक ले कुछ नहीं, ये provision के implementation के बाद से ही they had this power. So this particular thing 1, 2 and 3 are right, 4 is wrong. So we have A as the right answer. Then यहाँ पर सेशन और उससे रिलेटेड एक्टिविटी, कलकत्ता सेशन 1906, दादाभाई नरोजी हेड थे एंड स्वराज को यहाँ पर एक्सेप्ट किया गया था. देन सूरत सेशन, रस बिहारी बोस यहाँ पर चेयरपर्सन बने थे यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बने थे बाय डिफीटिंग लाला लाजपत राय, एंड स्प्लिट ऑफ कांग्रेस हैपेंड हियर. देन हरिपुरा सेशन जो है ये सुभाष चंद्र बोस इसके हेड थे एंड फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल कांग्रेस कमेटी. 1924 बेलगांव सेशन है एंड महात्मा गांधी है एंड दिस इज द ओनली सेशन प्रेसाइडेड बाय गांधी जी. यस, ऑल द 4 आर आमने सामने ही. सो 1 का 2, 2 का 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. ठीक है. सो 91 तक हमारा हो गया. 92
Assertion doctrine of lapse implemented by Lord Dalhousie was not limited only to the annexation of the Indian states, right, was not limited only to the annexation. Doctrine of lapse implemented by Dalhousie was not limited only to the annexation of the Indian states, right. Next, he annexed Awadh on the basis of misgovernance and stopped the pension of Nana Sahib, an adopted son of Peshwa Bajirao II, after his death. Yes, both are right and R is the correct explanation of this. ठीक है. Now, with reference to the constitutional reform के context में, the Government of India Act 1919 extended the separate electorate for Sikh, Indian Christians and Anglo-Indians, right. Government of India Act 1935, they implemented the diarchy at the center and provided the provincial autonomy, yes. Then August of 1940 ka, in this the dominion status was explicitly mentioned for the first time and demanded for the constituent assembly was conditionally accepted. Yes, all the three are right. So, the right answer is D. Then comes with reference to the leftist movement. अब आपको ये बताना है लेफ्टिस्ट मूवमेंट से रिलेटेड या कुछ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, व्हाट इज द राइट थिंग. पहला 94th का ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 1920 by and Lala Lajpat Rai was its first president. Yes. Forward Bloc formed by Subhash Chandra Bose in 1939 as a leftist faction within the Congress. Yes. And All India Kisan Sabha, Swami Sahajanand Saraswati was its founding president, 1936, Lucknow. Yes, all the three are right. So 94 ka it is D. 95 question is related to Khilafat movement. Pehla, the main objective of this movement was to restore the spiritual and the terrestrial prestige of the Sultan of Turkey, Ottoman Empire, who was considered to be Caliph. Yes, the Khilafat committee was formed in 1919 in Bombay, whose prominent leader included Ali brothers Shaukat Ali and Muhammad Ali, Maulana Abdul Kalam Azad, Hakim Azmal Khan. All these people were associated with this Khilafat movement, right. All India Khilafat Conference held in Delhi in November 1919 was presided over by Mahatma Gandhi, who saw this occasion as an opportunity for Hindu-Muslim unity not to be founded in 100 years. Yes, this movement ended in 1924 when the secular government was formed in Turkey under the leadership of Mustafa Kemal Pasha, and the post of Khalifa itself was abolished. Yes, so all the four is right. So the right answer is D. 95 का the right answer is D. Then 96, with reference to the administrative and military system of Vijayanagar Empire, consider the following statement. पहला, Nayankar system क्या होता था? Under this system, the king provided the amaram, that is land, to the Nayaks, in return of which they had to provide the military assistance to the king. Yes. Then Iyengar system, in this was the unique ruler administrative system of Vijayanagar, in which the group of 12 individuals and the hereditary right over the ruler administration. Yes. Tax system during the Vijayanagar period, Kadamai was a type of marriage tax. Nahi, Kadamai was not marriage tax, it was the land tax. Yeah, revenue hota tha, land revenue jaisa tha. So this one is, the statement is wrong. For an account, the Indian traveler Niccolo Conti has given a detailed description of the Sati system and the grand festival of Deepavali of Vijayanagar. Yes, 1, 2 and 4 are right and 3 is the wrong. So the right answer is A. Then 97, Vijayanagar Empire, Vijayanagar ke ruler Krishnadev Rai composed the Amukta Malyada in Telugu and Jambavati Kalyanam in Sanskrit. Yes. Then
द मेन फीचर ऑफ विजयनगर आर्किटेक्चर की अगर बात करें, द मेन फीचर ऑफ, सो द क्वेश्चन नंबर इज 97th. The main feature of Vijayanagar architecture was the construction of the Amman Viman, right? And the huge Kalyan Mandapam. Yes, Brahmani empire की अगर बात करें, Bahmani empire, this empire disintegrated into 5 states: Berar, Bijapur, Ahmednagar, Golconda and Bidar, and which together defeated the Vijayanagar empire in the battle of Talikota in 1565. Yes, all the three are right, so the right answer is C, that is all three, right? So we are done with 97 as well. Question number 98. With reference to Morley-Minto reform of 1909, consider the following statement. First, it provided for the association of an Indians with the Viceroy's Executive Council for the first time, in which Satyendra Prasad Sinha became the first Indian member. Yes, absolutely right. Introduce करता है system of separate electorate system, in which the Minto said we, इसने separate electorate system introduce किया, हाँ, in about which Minto said we are sowing the dragon teeth and harvest will be bitter. It is not by Minto, it is by Mayo to Minto. Mayo ने ये popular line कहा है Minto को, Mayo Minto, Morley ने कहा है Minto को, right? So second is wrong. Third, it increased the size of the central and the provincial legislative council, but the official majority was maintained in the central council. Yes, 1 and 3 is right, so the right answer is C. फिर 99th का, with reference to Home Rule League, Bal Gangadhar Tilak's league worked in Maharashtra excluding Bombay, Karnataka, then they worked in Maharashtra excluding Bombay, then Karnataka and Central Province, while any besant rest of India के लिए हाँ जी. Tilak gave the slogan Swaraj is my birthright, and his league was more organized and disciplined. Yes. Initially, Anglo-Indian and the most Muslim participated enthusiastically in the Any Besant's League. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. Anglo-Russian Convention 1907 provided the ideological base for Home Rule League. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. Anglo-Russian जो convention है has nothing to do with Home Rule League. तो fourth is also wrong. 1 and 2 is right, so the right answer is A. Final last question, that is 100th question. इसमें assertion है, Morley-Minto reform of 1909 instead of satisfying the democratic demand of nationalists resulted in the institutionalization of communalism. Yes, it provided a separate electorate for the Muslims and representations in excess of their proportion of the population. Yes, both are right and R is the explanation of A, so the right answer becomes A. Both A and R are correct, that is assertion and reason are correct, and R, that is reason, is the correct explanation of A. Okay? So with this we are done with the discussion of the 100 question, this one of the test number 17, which is of history and art and culture. I hope you understood the thing. If there is any question, you can connect with us and we will get back to you, right? So till then, goodbye, take care, thank you.